Hello students, today we read our second lesson from First Flight, Nelson Mandela Long Walk to Freedom, written by Nelson Rohila Mandela. ओके ये नेल्सन मंडेला ने खुद लिखा हुआ उनकी ऑटोबायोग्राफी में से लिया हुआ एक चैप्टर है. ठीक है. In this extract from his autobiography Long Walk to Freedom, उनकी ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसमें से ये एक छोटा सा चैप्टर जो है वो लिया गया है. Mandela becomes South Africa's first black president. Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. Mr. Mandela's African National Congress Party won 252 of the 400 seats in the first democratic election of South Africa's history. कहते साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में ये बहुत ही बड़ा एक दिन था जिस दिन ये नेल्सन मंडेला जो है आफ्टर 3 सेंचुरीज़ वाइट रूल के बाद जो है वो साउथ अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट जो है वो बने थे. The inauguration ceremony took place in the Union Building Amphitheatre in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. Never, never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. उन्होंने पब्लिक को एड्रेस करते हुए बताया था कि बहुत ज़्यादा जो डिग्निटरीज़ हैं और पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मोर देन 140 कंट्रीज़ से भी ज़्यादा कंट्रीज़ के जो बड़ी बड़ी डिग्निटरीज़ हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो लोग वहाँ पे आए थे. और वो जो सेरेमनी थी वो बहुत ज़्यादा एक तरह से यादगार बन गई थी. सो स्टूडेंट्स, आई विल tell you summary of this chapter because this is not possible to read this long lesson. Okay, so I try to explain you summary of this story. Many world leaders came to Pretoria to participate in the ceremony of installing Nelson Mandela as the President of the South Africa. It was the greatest gathering of distinguished personalities who were happy to see the end of the apartheid. Apartheid means जातीय भेदभाव. ठीक है. Apartheid is a political system that separates people according to their race. कि लोगों को according to their race उनकी रिलीजन, उनकी जाति के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उसको अपार्थहेड बोलते हैं. और नेल्सन मंडेला इसके बिल्कुल अगेंस्ट थे. सो द सेरेमनी वॉज हेल्ड इन एन एम्फीथिएटर. इट वॉज एन अट्रैक्टिव, कलरफुल एंड आई कैचिंग सेरेमनी मेकिंग द एंड ऑफ वाइट रूल एंड ऑल्सो द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. कहते हैं बहुत ही अट्रैक्टिव सेरेमनी थी क्योंकि इस सेरेमनी में क्या था, वाइट रूल का और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का एंड हो रहा था. एट द सेरेमनी मिस्टर डे क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वॉन इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेजिडेंट. द थाबो मैबिकी वॉज स्वॉन in as first deputy president. Nelson Mandela took a pledge to uphold the constitution and work for the well-being of South Africa when he was sworn as a president. और जब वो president की oath लेने के लिए जब वो खड़े हुए तो उन्होंने क्या कहा कि वो अब साउथ अफ्रीका की वेल-बीइंग के लिए काम करेंगे. Addressing the assembled guests, he said that they were all welcoming newborn liberty. कि newborn liberty के लिए सबका वो वेलकम करते हैं नेल्सन मंडेला. And he hoped that a new glorious society would result from the disastrous white rule which had ended. The rebels, criminals and the outlaws of yesterday were acting as hosts to the nation of the world. Mandela talked of a common victory for peace, justice and human dignity. उन्होंने common victory की बात की जो peace, justice और human dignity के लिए हुआ. And he talked the guests
for coming to South Africa to participate in this ceremony. South Africa's had achieved their political goal of freedom. Now they would free their people from the ills of poverty, suffering, and racial discriminations. He declared that the day of oppression means अत्याचार, एक तरह से किसी के साथ बुरा व्यवहार करना, उसको ऑपरेशन बोलते हैं. तो ही डिक्लेयर दैट द डे ऑफ ऑपरेशन वर ओवर and they were free. In the sky, aeroplanes were flying in perfect formation. This was an expression of loyalty to the new government. A few minutes earlier, military and police officers had saluted Mandela and pledged their loyalty to his government. Flying jets made a V sign in the sky. Two national anthems were played. Blacks and whites were singing together. Old system was now overthrown and all people were granted freedom and rights. This objective had been achieved through the sacrifices of the black of the South Africa. Mandela was the sum well as symbol of their sacrifices. They were not with him to see the result of their sacrifices. नेल्सन मंडेला कहते हैं बहुत सारे ब्लैक पीपल्स ने उनका जो है वो लाइफ सेक्रीफाइस किए हैं इस अचीवमेंट के लिए, इस फ्रीडम को गेन करने के लिए. वो कहते हैं दे वर नॉट विद हिम टू सी द रिज़ल्ट ऑफ देयर सेक्रीफाइसेस. वो आज वहाँ पे है नहीं है, अलाइव नहीं है वो लोग उस रिज़ल्ट को देखने के लिए, इस फ्रीडम को देखने के लिए. इट विल टेक द ब्लैक्स मैनी ईयर्स टू इरेज द क्रूएलिटीज़ ऑफ अपार्थाइड. कहते हैं ब्लैक लोगों को बहुत सारे साल लग गए, मैनी ईयर्स to erase the cruelties from their memory. Apartheid produced many great patriots who were brave, wise and generous. कहते हैं उन्होंने बहुत सारे patriots, बहुत सारे देशभक्तों को जन्म दिया. इस जो ये अपार्थाइड का प्रोसेस था, अपार्थाइड मीन्स जातीय भेदभाव जो किया जाता है लोगों के साथ, कलर, क्रीड, रिलीजन को लेके. South Africa is rich in minerals and gems, but its greatest wealth is its people. Mandela learned the meaning of courage from his comrades who, like him, were great freedom fighters. Courage is not the absence of fear, it is a triumph over it. Triumph means victory. Nobody is born with hatred in their hearts of people who possess different religions or have different colors of their skin. Love is more natural for human beings than hatred. The guards who kept watch over Mandela when he was behind the bars of the prison sometimes displayed this love. कहते हैं आज वो सब लोग नेल्सन मंडेला को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, गार्ड कर रहे हैं, जिन्होंने कभी उसको बार्स के बिहाइंड रखा था. मतलब जब वो जेल में थे, जिन लोगों ने उनको जेल में बंद किया हुआ था, आज वो सारे उनके रिस्पेक्ट में उनकी एज उनके गार्ड खड़े हैं. मंडेला बिलीव्स ही वॉज बॉर्न फ्री टू रन इन द फील्ड्स और स्विम in the streams and ride the backs of bulls. When he obeyed his father and observed the customs of his tribe, he never bothered about the law of God or man. When he realized that his freedom was taken from him, he tried to get it back. At first, he sought the freedom of a student to stay out at night and read what pleased him. Then he sought the freedom to earn his keep, to marry and have a family. Then he saw that neither he nor his people were free. He joined the African National Congress. He jumped into the struggle to achieve freedom for his people. Thus he who was the lawyer became a criminal. He who was a man with a family became a monk, and a man without a home. According to Mandela, freedom is invisible. No one is free if others are not free. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि फ्रीडम क्या है, इनविजिबल है. नो वन इज़ फ्री इफ़ अदर्स आर नॉट फ्री, कि सभी लोग अगर फ्री होंगे तभी वो फ्रीडम की कोई वैल्यू है. अगर सब लोग फ्री होंगे तो
So this is the summary of your lesson 2. Maybe you all are understood